बॉटम अप को स्मॉल चंक प्रोसेसिंग भी बोलते हैं और टॉप डाउन को कंसेप्चुअली ड्रिवन प्रोसेसिंग बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, आप एग्जांपल देख सकते हैं जी। बेसिकली इसमें लिखा है द मैन रैन। अब इसमें आप क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर एम्बिगुअस लेटर मौजूद है ना, एंड सेम शेप इज परसीव्ड एज एच एंड समटाइम्स एज ए। So you will identify the whole word, the first one as the, and क्योंकि आपकी जो टेंटेटिव नॉलेज है उस वर्ड की, that helps you to identify the second letter as H. So in other words, context definitely facilitates your pattern recognition. Some of the researchers on context and pattern recognition has focused on आइडेंटिफाइंग एम्बिगुअस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कुछ रिसर्च हैं ऐसे कॉन्टेक्स्ट रिकॉग्निशन पैटर्न रिकॉग्निशन के एरिया में कॉन्टेक्स्ट के साथ जो एम्बिगुअस फिगर को आइडेंटिफाई करने पे फोकस करते हैं। पामर फाउंड दैट पीपल वर मोर लाइकली टू रिकॉग्नाइज एम्बिगुअस फिगर व्हेन इट वाज लोकेटेड इन एन अप्रोप्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट। जब एक फिगर अप्रोप्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल किचन सीन अगर प्रोवाइडेड है तो एक लॉफ ऑफ ब्रेड को आइडेंटिफाई करना आसान है rather than a mailbox. One of most widely demonstrated phenomena in pattern recognition is word superiority effect. So word superiority effect के कारण we can identify a single letter more accurately and more readily when it appears in a word than when it appears in a string of unrelated words. जैसे अगर एक लेटर को हम बेहतर आइडेंटिफाई कर पाते हैं इफ़ इट अपीयर्स इन वर्ड रादर दैन अगर वो किसी नॉन वर्ड में एग्जिस्ट करता है। लाइक द वर्ड सुपीरियॉरिटी इफेक्ट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड मोर देन अ सेंचुरी अगो बाय कटेल। ड्यूरिंग करंट सेंचुरी, रीचर REICHER रीचर renowned psychologist was interested in effect word superiority का. So when he demonstrated that recognition accurately was substantially higher when so he said basically demonstrated कि recognition accuracy substantially higher होती है when letter appears in a word like work than in a non-word such as ORWK. Now since then dozens of studies have confirmed the importance of top-down processing in letter recognition. For example, चैस्टिन की स्टडी है, क्रूएगर की स्टडी है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड रीडिंग, context helps us recognizing the letters of alphabet during reading also. We don't read letter by letter. Analyzing all the individual features in the letter of the word would be too much work for the perceptual processes. So we can still manage to read a sentence even if some of the middle letters in the word have become rearranged, right? कॉन्टेक्स्ट हमें लेटर रिकॉग्निशन को में हेल्प करता है, अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज में हेल्प करता है ड्यूरिंग रीडिंग। सो वी डोंट रीड लेटर बाय लेटर, हम लेटर बाय लेटर रीड नहीं करते। एनालाइजिंग ऑल द इंडिविजुअल फीचर्स इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सो वी डोंट एनालाइज एक एक टुकड़ा, राइट, a single feature of in the letter of words because it would be too much for our perceptual process. But we can still manage to read a sentence. मतलब एक सेंटेंस को रीड करना हम still manage कर सकते हैं अगर कुछ middle words ना भी हों तो, ठीक है, in a word that have been rearranged. Past experience and pattern recognition. Pattern recognition is also facilitated when a person has had a previous experience with an object. तब भी फैसिलिटेट होता है पैटर्न रिकॉग्निशन अगर एक व्यक्ति के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो उस ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल, यू कैन रिकॉग्नाइज कॉफ़ी कप मोर रेडिली बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। पीपल फ्रॉम अनदर कल्चर हु आर अनअकस्टम्ड टू कॉफ़ी कप्स may have a difficulty in recognizing the distinct shape if a blurry slide was quickly represented. ऐसे कल्चर्स जहाँ कॉफ़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर अगर ब्लरी स्लाइड के पीछे कॉफ़ी मग दिखाया जाए तो वो डिस्टिंक्टिव शेप को आइडेंटिफाई पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे।